हेलो एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर ऑफ एनिमल किंगडम। यहाँ पर आपका पूरा एमसीक्यू मिलेगा, पूरा चैप्टर आपका फुल रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपका पूरा एनसीईआरटी का डिटेल्स रिवीजन भी है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले एनिमल किंगडम चैप्टर से। यहाँ पर टोटल 300 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। आप इसको रिवीजन की तरह देख सकते हो, कैसे कैसे रिवीजन कर सकते हैं, आपका रोल नंबर, सेक्शन, ये सब आप कर लेना। हम स्टार्ट करते हैं पहली क्वेश्चन में। पहली क्वेश्चन है, ओवर डैश स्पीसीज ऑफ एनिमल हैव बीन डिस्क्राइब्ड सो फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन एसेंशियल। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 मिलियन। Second question, classification helps in assigning a systematic dash to newly described species. इसका आंसर होगा systematic position. Despite differences in structure, animals share common dash features used as basis for classification. इसका आंसर होगा fundamental. पूरा सा क्वेश्चन डिस्कस होगा आज, जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन जिसको बोलते हैं। अगली क्वेश्चन, इन स्पॉन्जेस सेल्स आर अरेंज्ड एज अ लूज सेल एग्रीगेट शोइंग डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका होगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिवीजन ऑफ डैश अमंग सेल्स ऑकर इवन एट द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 5 का होगा लेबर। इन कोइलन ट्रेट सेल्स परफॉर्मिंग the same function are grouped into dash showing tissue level। 6 का होगा टिश्यू। Platyhelminthes are and higher phyla show dash level of organization where tissue form organs। सबका आंसर होगा organ level of organization where tissues form organs। In annelids, arthropoda, mollusca, echinodermis and chordate organ form functional dash। इसका आंसर होगा organ system। The digestive system of Platyhelminthes has a single opening serving as both mouth and anus. It is called as incomplete digestive system। Incomplete digestive system। A digestive system with two separate opening, mouth and anus, is described as complete digestive system। In circulatory system में आप आ जाते हैं। In and dash circulatory system, blood is pumped out of the heart and bath tissue directly। इसका होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो पंप होता है और हार्ट एंड बाथ टिश्यू डायरेक्टली। इन ए डैश सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सर्कुलेट थ्रू आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसका आंसर होगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज के थ्रू। Arteries carry blood dash from heart while veins carry blood dash to the heart। यहाँ पर पहले होगा away, arteries carries away from the heart और दूसरा जो होगा वो है towards to the heart। Body symmetry, sponges are mostly dash meaning no plane divides them into equal halves। 14 का होगा asymmetrical। Sponges are asymmetrical meaning no plane divided them into equal halves। अगली क्वेश्चन, when any plane thought the central axis divides an organism into two identical halves, it is dash symmetry। It is radial symmetry। Coelom trait, Ctenophora and Echinodermata exhibit dash symmetry। इसका आंसर होगा रेडियल सिमेट्री, मतलब जो ऊपर का है वही रेडियल सिमेट्री। इसका एग्जांपल देख लो, कोइलन ट्रेट, टिनोफोरा एंड एकाइनोडर्माटा।
Annelida and arthropoda divisible into equal left and right halves in only one plane, so dash symmetry. 17 का होगा bilateral symmetry. An organism with bilateral symmetry has a distinct dash side and a dash side. इसका आंसर क्या होगा सोचो. इसका पहली आंसर होगा डॉर्सल साइड, दूसरी आंसर होगा वेंट्रल साइड. मतलब एन ऑर्गेनिज्म विद बाइलेटरल सिमेट्री हैज ए डिस्टिंक्ट डॉर्सल साइड एंड ए वेंट्रल साइड. Animal with cell arranged in two embryonic layer, ectoderm and endoderm, are called क्या बोलते हैं उसको? डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. Coelontrate are example of dash animal. Coelontrate are of diploblastic animal. The undifferentiated layer between ectoderm and endoderm in diploblastic animal is mesoglia. Animal having a third germinal layer called mesoderm are called triploblastic. Platyhelminthes to chordates are all dash animal. Triploblastic animal. The outermost germinal layer in animal is the ectoderm. The innermost germinal layer lining the gut is the endoderm. The body cavity is lined by dash is called coelom. Mesoderm. The body cavity lined by mesoderm is called coelom. Animal possessing true coelom are called coelomates. Coelomates. Annelida, mollusca, arthropoda, echinodermata, hemichordata and chordata are all of coelomate. A body cavity not lined by mesoderm, where mesoderm exists as a scattered pouches, is called pseudocoelom. Animal with pseudocoelom are called dash. Example: Aschelhelminthes. Animals with pseudocoelom are called pseudocoelomates. Animal with pseudocoelom is called pseudocoelomate. Example होगा Aschelhelminthes. Animal lacking any body cavity are called dash. Example: Platyhelminthes. Acylomate. Animal lacking acylomates are called. Example: Platyhelminthes का example होगा Aschelhelminthes. Acylomate, sorry. The coelom developed from the dash middle germ layer. सोचो. The coelom developed from mesoderm is called middle germ layer. In some animals, the body is divided into segments with serial repetition of organs. This is called metametic segmentation. The phenomena of metametic segmentation is known as dash. Is called as metamerism. A classic example of metamerism is seen in the dash. So a classic example of mesomerism is seen in earthworm. The notochord is a mesodermally derived dash structure formed on the dash side during embryonic development. Rod-like और दूसरा होगा dorsal और ये होगा dorsal. A notochord is a mesodermally derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development. Animal possessing notochord are called chordates.
Animals that do not form a notochord are called dash. Easy जैसे Porifera to Echinodermata. Animals that do not form a notochord is called non-chordates. Notochord was first described in dash subphylum where it runs from head to tail. Is described in cephalochordates. In vertebra, notochord is eventually replaced by the vertebral column. In vertebrates, the notochord is eventually replaced by vertebral column. The broad classification of Animalia is based on the dash fundamental features. Is common fundamental features. The broad classification of animal is based on the common fundamental features. Animal with cellular level of organism and mostly asymmetrical body belong to phylum Porifera. Radial symmetry acylomate animal with tissue level belong to phylum dash and dash. Coelontrata and Ctenophora. पहला होगा कोइलोन्ट्रेटा और दूसरा होगा टीनोफोरा. Bilateral symmetrical acylomate animal with organ system level belong to phylum Platyhelminthes. Bilateral symmetrical pseudocoelomate belong to phylum Aschelhelminthes. Bilateral symmetrical coelomate segmentation animal with organ system level include phyla dash and dash, Annelida and Arthropoda. The phyla characterized by jointed appendages and exoskeleton of cuticle is dash. Is Arthropoda. The phylum characterized by joint and appendages and exoskeleton is cuticle is Arthropoda. The phylum characterized by external calcareous cell and radula is dash. क्या होगा सोचो? मोलस्का. The phylum with water vascular system and radial symmetry is dash. Is called Echinodermata. The phylum characterized by notochord, dorsal hollow nerve cord and gill slits is dash. Is chordates. Phylum Porifera में एंटर करते हैं. पहली क्वेश्चन देख लो. मेंबर ऑफ phylum Porifera are commonly called dash. Is commonly called sponges. Sponges are generally dash animal. Is generally marine animal. Sponges are primitive dash animal exhibiting cellular level of organization. Is multicellular animal exhibiting cellular level of organization. The water transport system in sponges is also called dash system. Is called canal system. Water enter the sponge's body through minute pores called dash in the body wall. Is called ostia. उसके बाद the central cavity of sponges is the is the spongocele. Water exhibit the sponge through an opening called dash. Osculum.
The pathway of water transport in sponges is useful for food gathering, dash, exchange and removal of waste. Respiratory. The pathway of water transport in sponges is useful for food gathering, respiratory exchange and removal of waste. The collar cell or dash line the spongocele and canal of the sponges. Choanocyte. The collar cell or choanocyte line the spongocele and canal of the sponges. Digestion in sponges is dash occurring inside individual. So, intracellular. Digestion in sponges is intracellular occurring inside the individual. The skeleton of sponges is supported by dash or spongin fiber. Spicules. The skeleton of sponges is supported by spicules or spongin fiber. Since sponges produced both eggs and sperm, they are called hermaphrodite. Sponges reproduce asexually by dash and sexually by formation of gametes. So, fragmentation. Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. Fertilization in sponges is internal. The larval stage of sponges is morphologically dash from the adult, making development dash. Distinct. The larval stage of the sponges in morphology distinct from the adult and making development indirect. The freshwater sponges is dash. The bath sponges is dash. The freshwater sponges क्या होगा? The freshwater sponge होगा स्पॉन्जिला, पहले होगा स्पॉन्जिला और दूसरे होगा यूस्पॉन्जिला. ना क्या होगा ये? हाँ, स्पॉन्जिला आंसर दिया है, स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया. Cyclone is also known as Skypha. Cyclone is also known as Skypha. Coelenterates are aquatic, mostly dash sessile or free swimming animal. 68 में क्या होगा? Marine. Mostly marine, sessile or free swimming animal. ये पूरा क्वेश्चन आ सकता है. The phylum is called Cnidaria because of specialized cells called dash or coenotrate. तो इसका क्या होगा आंसर? Is called nidoblast. The stinging capsule inside nidoblast are called nematocytes. Nidoblast serve three functions: and encourage, dash, and capture the prey. And nidoblast serve three functions: encourage, defense, and capture of prey. Cnidarian exhibit dash level of organization and are dash. Exhibit tissue level of organization and diploblastic and are diploblastic. मतलब दो जार्म लेयर होता है, इसलिए पहले तो होगा, इससे पहले होगा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होगा डिप्लोब्लास्टिक. The central gastrovascular cavity of cnidarians has a single opening mouth on the hypostoma. Digestion in cnidarians is both dash and dash. Is both extracellular and intracellular. Some cnidarian possess a skeleton made of calcium carbonate. The two basic body forms in cnidarians are the sessile dash and the free swimming dash. ये तो आना चाहिए भाई. एक होगा पॉलिप और दूसरा होगा मेडुसा. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है.
The polyform in sessile and cylindrical example dash and Adamsia. तो जो Adamsia के अलावा क्या था? Hydra. The medusa form is umbrella shaped example dash jellyfish. सोचो umbrella shaped कौन है जो jellyfish का दूसरा नाम है? Aurelia. Jellyfish का ही दूसरा नाम क्या है? Aurelia. Cnidarians that exhibit in both forms show alteration of generation called metagenesis. In metagenesis, dash produce medusa asexually and medusa from polyp sexually. Polyp produce medusa asexually and medusa from polyp sexually. Physalia is commonly known as Portuguese man of war. Portuguese PMW. Adamsia is commonly called sea anemone. बंगाली में बोलते हैं समुद्र शोषा. पेनिनसुला is called dash and Gorgonia is called dash. पहला होगा सी पेन, दूसरा होगा सी फैन. एक होगा पेनिनसुला होगा सी पेन एंड Gorgonia होगा सी फैन. Meandrina is commonly known as सोचो ब्रेन कोरल. Cnidarians are dash symmetrical animal. सोचो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल. दूसरा फाइलम में आ जाता है फाइलम टिनोफोरा. टिनोफोरा आर कॉमनली कॉल्ड सी वॉलनट और कॉम्प जेलीज. They are exclusively dash organism. They are exclusively marine organism. The body of Ctenophora bears dash external rows of ciliated complex. 8. The body of Ctenophora bears 8 external rows of ciliated complex. Complex help in locomotion. सिर्फ और सिर्फ locomotion में ही help करता है. The ability of emit light well marked in Ctenophora are called bioluminescence. The ability of emit light well marked in Ctenophora is called bioluminescence. इसका अगली फाइलम प्लेटियलमिंथेस. प्लेटियलमिंथेस का पहली क्वेश्चन. प्लेटियलमिंथेस are called dash because their body is dorsoventrally flattened. Platyhelminthes is called flatworm because their body is dorsoventrally flattened. Most platyhelminthes are dash found in animal including human being. Most platyhelminthes are endoparasites found in animal. Flatworms are bilateral symmetrical dash and acylomate. Flatworms are triploblastic and acylomate. Parasitic flatworm possess hooks and dash for attachment. सोचो इसका आंसर होगा suckers. Platyhelminthes parasitic flatworm possess hooks and suckers for attachment. Some flatworms absorb nutrient directly through their body surface. Some flatworms absorb nutrient directly through their body surface. Specialized cells called dash help in osmoregulation and excretion. Specialized cell called as flame cell. Specialized cell flame cell help in osmoregulation and excretion. Sexes in platyhelminthes are dash separate. Are not separate. Sexes in platyhelminthes are not separate as they are hermaphrodite. Fertilization in platyhelminthes is dash and development is thought many larval stage. Is internal. Fertilization in platyhelminthes is internal and development is thought many larval stages. Planarian is notable for its high dash capacity. For its regeneration capacity. The tapeworm belongs to genus dash and the liver fluke belongs to genus dash.
The tapeworm belongs to Tinea and the liver fluke belongs to Fascicula. पहला होगा टीनिया, दूसरा होगा Fascicula. दूसरी phylum Escalhelminthes. Escalhelminthes are also called dash because their body is cellular in cross section. क्या होगा इसका? Is round worm. Escalhelminthes are also called round worm क्योंकि इसका बॉडी जो है वो सर्कुलर एंड इन क्रॉस सेक्शन होता है. They may be free living, aquatic, terrestrial or dash in plant or animal, or parasitic in plant and animal. Roundworm have dash level of body organization. Roundworm have organ system level of body organization. They are bilateral, symmetrical, dash and pseudocoelomate. They are triploblastic. They are bilateral, symmetrical, triploblastic and pseudocoelomate. The alimentary canal of Escalhelminthes is complete with a well-developed muscular dash pharynx. The alimentary canal of Escalhelminthes is complete with a well-developed muscular pharynx. Body waste are removed through dash pores. Body waste are removed from excretory pore. Sexes in Escalhelminthes are dash, males and female are distinct. Sexes are separated. Sexes are separated in males and female. In Escalhelminthes, females are often dash than male. In Escalhelminthes, it has होगा longer. Females are longer than males. Ucheria causes the disease called, ये तो आना चाहिए, होगा filaris. Ucheria causes disease filaris. And Cyclostoma is commonly known as hookworm, and Cyclostoma is also known as hookworm. The phylum name Annelida comes from the Latin word annals means 111 का क्या होगा? Little ring. Annelida may be aquatic, terrestrial or free living. पैरासाइटिक और फ्री लिविंग, मतलब टेरिस्ट्रियल भी हो सकता है, फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है. Annelida exhibit organ system level and dash symmetry and bilateral symmetry. They are triploblastic, dash segmented and coelomate. They are triploblastic and metamerically segmented and coelomate. The distinct body segment of Annelida are also called as metamers. Annelida possess dash and circular muscles aiding locomotion. इसका होगा longitudinal. Annelida possess longitudinal and circular muscle aiding locomotion. Lateral appendages called dash in aquatic annelid like nereis help in swimming. इसका आंसर होगा parapodia. Lateral appendages called parapodia in aquatic annelids like nereis and attaches swimming. The circulatory system in annelids is of dash type. The circulatory is of closed type. Circulatory system जो है annelida का वो closed type का होता है. Dash in annelids help in osmoregulation and excretion. इसका आंसर होगा नेफ्रिडिया. नेफ्रिडिया जो है ना वो नेफ्रिडियम सिंगल में होता है. नेफ्रिडिया जो है वो annelida में osmoregulation and excretion में help करता है. The neural system of Annelida consists of paired dash connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord. इसका आंसर होगा ganglia. Now nereis is dash but earthworm and leeches are dash. पहले का आंसर होगा dioecious, दूसरे का आंसर होगा monoecious. Nereis is dioecious and our leeches are monoecious. Peritima is the scientific name of earthworm. Hirudinaria is a blood-sucking leech. Arthropoda is the dash phylum of Animalia. Arthropoda is the largest phylum of Animalia. Arthropoda जो सबसे बड़ा है Animalia में. Over dash of the all animal species on earth and arthropoda. Over मतलब कितना मिलियन होता है वो? सोचो. Over 2/3 of all named species.
आर्थ्रोपोडा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर बायलैटरल सिमेट्रिकल, ये सब देख लेना। आर्थ्रोपोडा जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड बायलैटरल सिमेट्रिकल है। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय ए डैश एक्सोस्केलेटन, इज कवर्ड बाय ए thorax exoskeleton. The arthropod body consists of head, dash and abdomen. इसका आंसर होगा appendages. The arthropoda body consists of head, appendage and abdomen. The name arthropoda comes from Greek word meaning jointed tracheal system. Respiratory organ in arthropod may be gills, buc lung और क्या होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या क्या होगा, गिल्स है एक है, दूसरा है बुक गिल है, तीसरा है बुक लंग और क्या होगा ओपन। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज ऑफ डैश टाइप, ये शायद होगा ओपन टाइप। ये होगा ओपन टाइप। सेंसरी ऑर्गन इन आर्थ्रोपोडा इंक्लूड एंटीना, compound and simple eye are is called, ये होगा स्टैटोसिस्ट। Excretion in arthropoda occurred through Malpighian tubules. Arthropoda are mostly क्या होगा इसका आंसर dioecious. Fertilization in arthropoda is internal. Most animal are oviparous, मतलब जो एग लाइंग है ना उसका ही दूसरा नाम ओविपोरस है। एपिस इज द हनी बी, बॉम्बिक्स इज द डैश, लेसिफर इज द डैश, क्या होगा इसका सोचो। पहले का होगा सिल्कवर्म, दूसरा का होगा लैक इंसेक्ट। पहले का होगा सिल्कवर्म, दूसरा का होगा लैक इंसेक्ट लैक इंसेक्ट। Vectors for disease Anopheles dash and Aedes are mosquito. Culex. Locusta is a gregarious pest. ये तो आपको जानता ही होगा। नहीं, ये नहीं है, लोकास्टा पेस्ट नहीं है। लोकास्टा क्या है? लोकास्टा है आपका लिविंग फॉसिल। नहीं लिविंग नहीं, सॉरी कुछ गलत है। लिविंग फॉसिल होगा आपका लिम्यूलस, सॉरी लिविंग फॉसिल होगा लिम्यूलस, ये है लिविंग फॉसिल, और ये जो पहली वाला है वो पेस्ट होगा। फाइलम मोलस्का, मोलस्का इज द डैश लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, इज द सेकंड लार्जेस्ट। मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक विथ डैश लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोचो, इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देख लो क्वेश्चन, उसका आंसर क्या होगा। दे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट। द बॉडी ऑफ मोलस्का इज कवर्ड बाय ए डैश सेल एंड इज अनसेगमेंटेड, इज कैल्केरेनियस सेल एंड अनसेगमेंटेड। अगली वाला क्वेश्चन, द थ्री डिस्टिंक्ट बॉडी रीजन ऑफ मोलस्का आर हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हार्म। मतलब तो पहली होगा हेड, दूसरा होगा मस्कुलर फुट, तीसरा होगा विसरल हार्म। द सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन ओवर द विसरल हार्म इज कॉल्ड mantle. The space between visceral hump and mantle is called, कैविटी का क्या नाम है? इज कॉल्ड mantle cavity. Feather like dash in the mantle cavity carry out respiration and excretion. इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा गिल्स। फेदर लाइक जो है उसको गिल्स कहा जाता है। Mollusca are usually dash and oviparous with indirect development. Mollusca are viviparous. Mollusca are viviparous.
सेकंड जो है Echinodermata, Hemichordata और phylum. Echinodermata means dust, referring to their spiny body cavity. The Echinodermata means spiny bodied. All echinoderms are exclusively dash animal. Is marine animal. And the endoskeleton is made up of calcareous ossicules. Adult Echinodermata are dash symmetry, but larvae are dash symmetry. पहले होगा रेडियल सिमेट्री, दूसरा होगा बायलैटरल सिमेट्री. Echinoderma ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट. Echinoderma जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होता है, कोइलोमेट भी होता है. The digestive system is complete with mouth on the dash side and anus on the dash side. पहला होगा पहले का आंसर होगा वेंट्रल साइड, जो माउथ है वेंट्रल है में हो, और जो एनस में हो डोर्सल साइड में. The most distinctive feature of echinoderm is the dash system aiding locomotion, food capture and respiration. इसका आंसर होगा वाटर वास्कुलर सिस्टम. द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर जो है ना echinoderm में वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम. An excretory system is dash in echinoderm. An excretory system is absent in echinoderm. Reproduction is dash with usually external fertilization. क्या होगा इसका? Is sexual with usually external. जो मतलब इसका external fertilization होता है but sexual भी होता है. Development in echinoderm is indirect with free swimming dash. Free swimming larva. Asteris is commonly called dash. Echinus is called dash. वो जो पहला का होगा वो है स्टारफिश, दूसरा का होगा स्टार सी अर्चिन. पहले क्या होगा एस्टेरिस क्या कहा जाता है, स्टारफिश बोलता है, और यह है सी अर्चिन. एंटीडोन इज कॉल्ड डैश, क्यूकमेरिया इज कॉल्ड डैश. पहले का होगा सी लिली, दूसरा का होगा सी क्यूकम्बर. पहले का होगा सी लिली, दूसरा का होगा सी क्यूकम्बर. Ophiuria is commonly called brittle star. Hemichordata are earlier classified as a subphylum under phylum dash. Under phylum Chordata. The rudimentary notochord-like structure in the collar region of the Hemichordata is called dash. Is called stomochord. Hemichordates are a small group of worm-like dash animal, or like marine animal. Thus, they show organ system level and are bilateral symmetrical dash and the coelomate. इसका आंसर होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक. They show organ system level of bilateral symmetrical triploblastic and coelomate. The body of Hemichordata is composed of anterior dash, a collar and a long dash. दो क्या होगा सोचो. पहला का होगा प्रोबोसिस, दूसरा का होगा ट्रंक. एंटीरियर को कहा जाता है प्रोबोसिस और जो लॉन्ग ट्रंक होता है. द सर्कुलर सिस्टम इज इन हेमिकॉर्डेटा इज ऑफ डैश टाइप, इज ऑफ ओपन टाइप. respiration is in hemichordates take place through gills. The excretory organ of hemichordata is the dash gland. इसका आंसर होगा प्रोबोसिस ग्लैंड. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ हेमिचॉर्डाटा उसका प्रोबोसिस ग्लैंड कहता है. सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज डैश एंड डेवलपमेंट इज डैश. क्या होगा इसका? पहले का होगा एक्सटर्नल, दूसरे का होगा इंटरनल. पहले का होगा एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. टू एग्जाम्पल ऑफ हेमिचॉर्डाटा डैश एंड डैश. क्या होगा इसका? तो एग्जाम्पल पहले का होगा पेलेनोग्लोसस, दूसरा का होगा सैकोग्लोसस. बेलेनोग्लोसस एंड सैकोग्लोसस हेमिचॉर्डाटा का दो एग्जाम्पल है. द थ्री फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ चॉर्डाटा डैश डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड डैश फेरेंजियल गिल स्लिट्स. इसका क्या आंसर होगा?
पहले का होगा नोटोकॉर्ड, जो कैरेक्टर है पहले का होगा नोटोकॉर्ड, दूसरे का होगा डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड ए गिल स्लिट पेयर्ड फेरेंजाइड गिल स्लिट्स, पेयर्ड होना होगा, जो गिल स्लिट्स है ना वो पेयर्ड होना पड़ेगा। Chordates are bilateral symmetrical dash coelomate with organ system level. Is triploblastic coelomate and organ system level. They also possess a post-anal dash and a dash circulatory system. They possess tail. They also possess post-anal tail and a closed circulatory system. Phylum Chordata is divided into three subphylum dash and dash vertebra. इसका क्या होगा यूरोकॉर्डेटा, दूसरा होगा सेफालोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा into divided into subphylum यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा and vertebra. Subphylum यूरोकॉर्डेटा and cephalochordata are collectively called dash and are exclusively dash. is Protochordata and Benign. पहला का होगा subphylum यूरोकॉर्डेटा and cephalochordata are collectively called Protochordata and exclusively Benign. The Neurochordata notochord is present only in the larval stage. Larval stage में है tail. Neurochordata है ना, उसका notochord only और only larval tail में present होता है. In cephalochordates, notochord extend from dash to tail and is dash throughout life. पहला का होगा head, दूसरे का होगा persistent. In cephalochordata, notochord extends from head to tail and is persistent throughout life. पूरा इंसेक्टिकल लाइन है. एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेटा एसिडिया डैश डोलियम. सोचो साल्पा, जो यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है क्या क्या होगा, एसिडिया हुआ, साल्पा हुआ और डोलियोलम हुआ. एग्जाम्पल ऑफ सेफालोकॉर्डेटा डैश एम्फियोक्सस और लैंसलेट्स, क्या होगा इसका आंसर ब्रैंकियोस्टोमा. एग्जाम्पल ऑफ सेफालोकॉर्ड है ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस और लैंसलेट्स. मेंबर ऑफ सबफाइलम वर्टिब्रेटा. वर्टिब्रेटा possess notochord during the dash period. Member of subphylum embryonic. Member of subphylum Vertebrata possess a notochord during embryonic period. In adult vertebrates, the notochord is replaced by a cartilaginous or bony. क्या होगा इसका आंसर वर्टिब्रल कॉलम. बीटी लिख देता हूँ. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Chordates and non-chordates comparison में आ जाते हैं. In chordates, the central nervous system is dash and hollow and single. पहले का होगा डोर्सल. जो chordates का जो central nervous system होता है ना वो डोर्सल होता है, hollow and single होता है. In non-chordates, the central nervous system is ventral dash and double. In non-chordates, the central nervous system is solid and double. In chordates, the pharynx is perforated by gill slits. In chordates, the heart is dash. In non-chordates, it is dorsal. In chordates, the heart is ventral. A post-anal tail is dash in chordates but absent in non-chordates. क्या होगा इसका आंसर प्रेजेंट. जो post-anal tail है ना वो chordates में प्रेजेंट होता है but absent होता है non-chordates में. Subphylum Vertebrata is divided into Agnatha and dash. गैनाथोस्टोमा. द सबफाइलम जो वर्टिब्रेटा है जो डिवाइडेड होता है एग्नाथा में और गैनाथोस्टोमाटा में. गैनाथोस्टोमाटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सुपरक्लास डैश एंड डैश. बोलो इसका क्या होगा. इसका एग्जांपल होगा पीसेस एंड टेट्रापोडा. जो पहले होगा वो है पीसेस, दूसरा होगा टेट्रापोडा. सुपरक्लास होगा पीसेस और एक होता है टेट्रापोडा. Pieces include classes dash and dash. पहले का होगा कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा का होगा ऑस्टिक्थिस. कॉन्ड्रिक्थिस, दूसरा का होगा ऑस्टिक्थिस.
टेट्रापोडा इंक्लूड क्लासेस एम्फीबिया, डैश, एविस एंड मैमल्स। मैंने बोल दिया। पहले का होगा रेप्टाइल, दूसरा का होगा मैमल। एग्नाथा इज रिप्रेजेंटेड बाय क्लास Cyclostomata. Besides basic chordates character, vertebrata have kidney for dash and cosmoregulation. Basic excretion. Beside basic chordate character, vertebrata have kidney, excretion and osmoregulation. Vertebrata possess paired appendage which may be dash or limb. क्या होगा इसका आंसर? Fins. Vertebrata possess paired appendages which may be fins or limbs. Inventral muscular heart of vertebrata have 2, 3 और dash chamber और 4 चैम्बर। जो वर्टिब्रेटा का होता है ना, वो वर्टिब्रेट्स का होता है, और 1, 2 और 4 चैम्बर में डिवाइड है। एनिमल कैपेबल ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड होम्योथर्मस, जो अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। एनिमल अनेबल टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड PYQs। साइक्लोस्टोमाटा में आ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल लिविंग साइक्लोस्टोमेटा आर डैश ऑन द सम पीसेस। ऑल लिविंग साइक्लोस्टोमेटा आर ectoparasites. Cyclostomata have an elongated body bearing dash pairs of gill slits. इसका होगा 6 से 15, bearing 6 से 15 pairs of gill slits. They have a sucking and circular mouth without jaws. The body is devoid of dash and paired. The body is divided of scales and pairs. Both cranium and vertebral column of Cyclostomata are dash cartilaginous. The circulation in Cyclostomata is of dash type, is of closed type. Cyclostomata are dash but may migrate to dash water for spawning. बोलो कहाँ से माइग्रेट करता है? पहले का होगा मैराइन। Cyclostomata are marine but migrate to fresh water. After spawning, Cyclostomata dash within a few days. Cyclostomata die within a few days. Cyclostomata larvae are called Cyclostomata larvae after dash returning to the ocean after metamorphosis. Petromyzon is called dash. Petromyzon is called dash. Myxine is called dash. बोलो। पहले का होगा लैम्प्रे, दूसरा का होगा हैगफिश। पेट्रोमाइजोन इज कॉल्ड लैम्प्रे, मिक्साइन इज कॉल्ड हैगफिश। Chondrichthyes are marine animal with streamlined body and dash exoskeleton. Is cartilaginous. Chondrichthyes and marine streamlined body and cartilaginous exoskeleton. The mouth in chondrichthyes is located dash. Is ventral. In chondrichthyes, notochord is dash thought out life. Notochord are persistent thought out life. Gill slits is chondrichthyes and are separate and without operculum. The tough skin of chondrichthyes contain minute dash scales. क्या होगा इसका आंसर? Contain placoid scale. Teeth in chondrichthyes are modified dash scales directed dash. क्या होगा इसका? पहले का होगा प्लेकॉइड, दूसरा का होगा बैकवर्डली। ये तो जानते हो प्लेकवर्ड स्केल होता है और जो डायरेक्शन है वो है बैकवर्ड। Chondrichthyes lack dash so they must swim constantly to avoid sinking.
पहले का होगा एयर ब्लैडर, कॉन्ड्रिक्टिस लैक एयर ब्लैडर सो दे मस्ट swim constantly to avoid sinking. The heart of chondrichthyes has a dash, one article and one vertical. इसका आंसर होगा टू चेम्बर. टू चेम्बर होता है, एक होता है वन आर्टिकल होता है, दूसरा होता है वेंट्रिकल. टॉर्पेडो हैज इलेक्ट्रिकल डैश, ट्राइगन हैज ए पॉइजनस डैश. इसका आंसर होगा ऑर्गन, दूसरा होगा स्टिंग. टॉर्पेडो जो है ना वो ऑर्गन, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होता है, और ट्राइगन पॉइजनस स्ट्रिंग होता है. स्टिंग. Chondrichthyes are dash are poikilothermous. In male chondrichthyes pelvic fins bear claspers. In male chondrichthyes pelvic bear clasper. Chondrichthyes have dash fertilization and many are. Chondrichthyes are सोचो are internal. पहले का होगा internal, दूसरा होगा viviparous. Carcharodon is the dash, Pristis is the dash. पहले का होगा 223. पहले का होगा ग्रेट व्हाइट शार्क, दूसरा का होगा सॉफिश. Carcharodon is great white shark and दूसरा होगा सॉफिश. ग्रेट व्हाइट शार्क और दूसरा का होगा सॉफिश. Osteichthyes include fishes with a dash endoskeleton. Is a bony endoskeleton. The body is dash. सोचो. The body is streamlined. The mouth is in Osteichthyes is mostly. The mouth is mostly terminal. The mouth in Osteichthyes is mostly terminal. They have dash pairs of gills covered by an operculum. इसका आंसर होगा 4. They have 4 pairs of gills covered by operculum. The skin is Osteichthyes covered with dash and tenoid scale. Cycloid. The skin of the Osteichthyes covered with cycloid and tenoid scales. They dash regulate buoyancy in Osteichthyes. They dash regulate buoyancy in Osteichthyes. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा air bladder. The air bladder regulates the buoyancy in Osteichthyes. The heart of Osteichthyes has dash, one auricle or one vertical. क्या बोलो? Has 2 chamber. Fertilization in Osteichthyes is usually dash and they are mostly dash. सोचो क्या होता है इसका आंसर? पहले का होगा एक्सटर्नल, दूसरा का होगा ओविपोरस. Fertilization in Osteichthyes is usually external and is mostly oviparous. Exocytus is the dash fish. Hippocampus is the dash. पहले का होगा फ्लाइंग, दूसरा का होगा सी हॉर्स. एक्सोसिट इज फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस इज सी हॉर्स. हिपोकैम्पस इज सी हॉर्स. समुद्र में घोड़ा चलेगा. लेबियो एंड कातला आर डैश फिशेस. बेटा इज केप्ट इन डैश. सोचो. पहले का होगा आपका फ्रेश वाटर, दूसरा का होगा एक्वेरियम. लेबियो एंड जो कातला है वो फ्रेश वाटर फिश है एंड बेटा वो है एक्वेरियम. द वर्ड एम्फीबिया कम्स फ्रॉम ग्रीक मीनिंग डैश. द वर्ड एम्फीबिया कम्स फ्रॉम ग्रीक मीनिंग 35 में है डुअल लाइफ. इसको मतलब ही है डुअल लाइफ. Amphibian can live in dash as well as terrestrial habitat. Amphibian can live in aquatic. Most amphibian have dash pair of limbs. Most have 2 pairs of limbs.
The body of amphibian is divisible into dash and trunk. Tail may be present in some. टू द टेल में होगा हेड. जो बॉडी ऑफ एम्फीबियन हेड ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड है. एम्फीबियन स्किन इज डैश विदाउट स्केल होगा मॉइस्ट, यानी एम्फीबियन जो स्किन है वो मॉइस्ट होगा विदाउट स्केल. द आई ऑफ एम्फीबियन हैव डैश. द आई ऑफ एम्फीबियन यूलिड्स. द आई ऑफ एम्फीबियन इज कॉल्ड यूलिड्स. A dash represent the ear in amphibian. इसका आंसर होगा tympanum. A tympanum represent ear in amphibian. Alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the dash which opens into the exterior. इसका आंसर होगा cloaca. Alimentary canal, urinary, reproductive tract open into cloaca which opens the exterior. Amphibian respire through gills, lungs and through skin. Amphibian respire through gills, lungs and skin. The heart of amphibian has dash chamber. The heart of amphibian contains 3 chambers. Amphibian are dash. Poikilotherms. Fertilization in amphibians is dash and development is dash. क्या होगा इसका? पहले का होगा एक्सटर्नल, दूसरे का होगा इनडायरेक्ट. Fertilization in amphibian and external and amphibian development is indirect. Hyla is the dash, frog, salamander is the dash. इसका आंसर क्या होगा? पहले का होगा ट्री, दूसरे का होगा salamander. Ichthyophis is an example of dash amphibia. Ichthyophis is known as limbless amphibia. रेप्टाइल में आ जाता है. रेप्टाइल में पहली क्वेश्चन है द क्लास नेम रेप्टाइल कम्स फ्रॉम लैटिन मीनिंग टू डैश क्रॉल. सोचो क्रीप. लैटिन मीनिंग क्रीप और क्रॉल. रेप्टाइल आर मोस्टली डैश एनिमल. Reptiles are mostly terrestrial animal. The body of reptile is covered by dry and dash skin, epidermal scales or cutules. क्या होगा इसका आंसर? पहले का होगा cornified. The body of the reptile are covered by dry and cornified skin, epidermal scale. Reptile do not have dash ear opening. Reptile do not have external ear opening. The dash represent the ear in reptile. The tympanum represent the ear in reptile. Limbs when present are dash pairs. Are top 2 pairs. The heart of most reptile is dash chambered but it is 4 chambered. बोलो ये तो जानते होगा आप लोग. पहले का होगा 3 होगा. The heart of the most reptile are 3 chambered. बट इन क्रोकोडाइल कुमीर में ये 4 चैम्बर का होता है. रेप्टाइल्स आर डैश आर पोइकिलोथर्मस. रेप्टाइल्स आर पोइकिलोथर्मस. स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल एज. बोलो इसका आंसर क्या है? स्किन कास्ट. द स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल एज ए स्किन कास्ट. फर्टिलाइजेशन इन रेप्टाइल इज डैश एंड दे आर डैश. पहले का होगा इंटरनल, दूसरा का होगा ओविपोरस. फर्टिलाइजेशन इन रेप्टाइल इज इंटरनल एंड दे आर ओविपोरस. पॉइजनस स्नेक्स डैश बैंगरस एंड डैश विविपर. बोलो इसका आंसर क्या होगा? पहले का होगा नाजा, दूसरे का होगा वाइपर लिया है. किलोना इज द डैश, टेस्ट्यूबा इज द डैश. इसका आंसर क्या होगा? पहले का होगा टार्टल, दूसरा का टॉर्टोइस. चिलोनी is a turtle or Testuda is a tortoise. The most characteristic feature of the bird is presence of feathers.
मैमल्स के अंदर जो मैमिलरी ग्लैंड हो ना उसका फेदर, बर्ड्स के अंदर फेदर्स होता है. मोस्ट बर्ड कैन फ्लाई. फ्लाइटलेस बर्ड इंक्लूड, इसका क्या होगा, इसका होगा रेप्टाइल्स, रैटिट्स. मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई. फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड रैटिट्स जिसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच. बर्ड्स पॉसेस ए डैश ब्रिक. Birds possess a beak. Birds possess a beak. 4 limbs of birds are modified into wings. जो 4 limbs है ना वो wings में divided हो जाता है. Hind limbs of birds have scales and are modified for walking, swimming or clasping. Walking, swimming और clasping में help करता है. The skin of the is dry. The skin is dry without gland except the dash gland at the base of the tail. इसका क्या होगा, oil. The exoskeleton of birds is fully dash. Long bones are hollow and dash. इसका क्या आंसर होगा, पहले का आंसर होगा ओसिफाइड और दूसरा का होगा न्यूमेटिक. फुल्ली ओसिफाइड और दूसरा होगा न्यूमेटिक. The additional digestive chamber in bird are the dash and gizzard. इसका आंसर होगा crop. The additional digestive chamber in birds are the crop and gizzard. Birds are dash. Birds are homeothermous. The heart of bird is completely dash chambered. The heart of bird is completely 4-chambered. क्लास मैमिलिया में पहली क्वेश्चन है मैमिलिया. मैमल्स आर फाउंड इन डाइवर्स हैबिटेट, पोलर, आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन, फॉरेस्ट एंड डैश एंड डार्क केव्स. इसका आंसर क्या होगा, सोचो. ग्रासलैंड. दूसरी क्वेश्चन करो. सम मैमल्स हैव एडेप्टिव टू फ्लाई और लिव इन वाटर. द मोस्ट यूनिक मैमेलियन फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ डैश. इज द प्रेजेंस ऑफ मैमलरी. ये तो इजी था. मैमलरी ग्लैंड प्रोड्यूस डैश टू नरिश यंग वंस. मैमलरी ग्लैंड प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश यंग वंस. Mammals have dash pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming, and flying. Have two. Mammals have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing. The skin of mammals is unique in possessing hair. External ear or dash are present in mammal. Pinea. External iris or pinea. Different types of dash are present in the mammalian jaw. इसका आंसर होगा teeth. Different types of teeth are present in mammalian jaws. The heart of mammals is dash chambered. The heart is mammals of 4-chambered. Mammals are dash. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा होमियोथर्मस. Mammals are homeothermous. Respiration in mammals is by lungs. Most mammals are dash, a few are dash. इसका आंसर होगा, पहले का होगा ओविपोरस, दूसरे का होगा ओविपोरस. पहले ओविपोरस, दूसरा का ओविपोरस. The oviparous mammal is dash. होगा the oviparous mammal is in platyhelminthes. Macropus is a dash mammals. इसे viviparous mammals. Macropus जो है ना kangaroo है वो viviparous mammals है. Pteropus is commonly called flying fox. Balænoptera is the dash. इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है blue whale. Balænoptera जो है blue whale है. Delphinus is common as
डॉल्फिन, पैंथेरा टाइगर इज द डैश, पैंथेरा लियो इज द डैश। पहले का होगा टाइगर, दूसरे का होगा लायन। अब एग्जाम्पल बेस्ड आप ये सब देख लो। तो साइकोन है फाइलम, कौन सी फाइलम में आता है वो? देखो देखो, सोचो, वो है पॉलीफेरा में आता है। ओवेलिया फाइलम क्या होगा? कोइलोन्ट्रेटा। टिनोफेरा फाइलम क्या होगा? टिनोफोरा। टिनोप्लेना का फाइलम क्या है? टिनोफोरा। फैसिक्यूला फाइलम है, इसका फाइलम क्या होगा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। उचेरिया फाइलम, उचेरिया का फाइलम क्या होगा? एस्केलेल्मिन्थेस। नेरिस का फाइलम क्या होगा? एनिलिडा। लिमुलस का फाइलम क्या होगा? सोचो सोचो, आर्थ्रोपोडा। पिनेक्टाटा का फाइलम क्या होगा? मोलस्का। ब्रैंकियोस्टोमा का सब फाइलम क्या होगा? सोचो, सेफालोकॉर्डेटा। मिक्साइन का क्लास क्या होगा? साइक्लोस्टोमेटा। राना का क्लास क्या होगा? आम्फीबिया। क्रोकोडिलस का क्लास क्या होगा? सोचो, रेप्टाइल। ये जो है, ये मैं तो सब बोल दिया आंसर की, आप लोग देख लो। अगर आपको चाहता है ये पूरा पीडीएफ आपको मिल जाए तो प्लीज ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जे मेरे को ये पीडीएफ चाहिए, मैं पूरा पीडीएफ आपको दे दूंगा। इसका प्राइस है 10 रुपीज। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज हेल्प कर दीजिए और सब्सक्राइब और फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए।